Good evening to all the participants. We welcome you to this 52nd webinar from ICFAI, Wise Views. These leadership conversations we have been having every Friday at 7:30 p.m. And today we are going to have a highly distinguished guest. And the guest is about to join and there is a small delay. Very, very happy, delighted to see, sir. All of us are waiting to have a darshan. It is our good fortune that you have given us time to be part of this conversation. Sorry for delay. On behalf of ICFAI and everyone here, I wholeheartedly welcome you to this 52nd leadership conversation, sir. I have my esteemed colleague, Professor Prasad here, who is going to moderate the session. And namaste, sir. Very happy to see you. Namaste. Thank you very much. And a large number of people are joined or live on this show as well as on Facebook, which is being live streamed. We will straight away go to the program, sir. Today, ladies and gentlemen, we are having Mr. Vijay Barse live with us, and we are delighted. He is going to talk about sports as a social mission, citing the case of Slum Soccer. The first 20 minutes or so will be a talk by Mr. Vijay Barse, followed by Q&A for the next 40 minutes. Mr. Vijay Barse is a retired sports teacher from Hislop College in Nagpur with 36 years of service. He was born in the city of Nagpur and schooled from Bandara, a district of Maharashtra, and did his higher education in MA, MPED, and NIS in physical education. And he later worked as a lecturer in Hislop College, Nagpur, as a sports teacher. During one rainy day in July 2001, he saw some slum children playing football with a small plastic broken bucket. He noticed that while they were playing football using bucket, they were away from all the bad activities such as smoking, stealing, pickpocketing, drinking, etc. The whole scenario inspired him to do something for the underprivileged. He organized a football tournament for the youth, which turned out to be effective. In 2001, he founded Krida Vikas Sanstha Nagpur, which is widely known as Slum Soccer, nationally and internationally. The organization conducts football tournaments and provides them a chance of rehabilitation to the deprived section of society. Out of the tournaments conducted by Slum Soccer, he selected players to represent India at an international stage every year. Some of the achievements are, in the year 2016, Slum Soccer became the first organization to be awarded by FIFA with the Diversity Award. In 2018, FICCI awarded Slum Soccer Gender Diversity Award too. For his dedication towards slum soccer, CNN-IBN and Reliance Foundation awarded him the Real Hero Award at the national level with a cash prize. His work was showcased on the Amir Khan show, the very popular Satyamev Jayate. He was also awarded Nagbhushan Award, which is given by the Nagpur City Foundation. It's called Nagbhushan Foundation, established in Nagpur City, and this award was presented in the year 2019. He was also nominated into Nagpur Municipal Corporation to provide his services to the city of Nagpur between 2012 and 2017 as a corporator. Krida Vikas Sanstha has sent Team India at the Homeless World Cup since 2007. Every year, men's and women's teams participate in an international stage. During his service, Mr. Barse represented India as a handball official in China and Hong Kong. As you know, recently a movie Jund was made based on the life story of Mr. Vijay Barse. The lead role in this biopic was played by the superstar Amitabh Bachchan, which was directed by famous director Nagaraj Manchule. I think this is a fantastic real life story that we have hit upon, and we are extremely fortunate, as I have been mentioning, to be on the same frame as Mr. Vijay Barse. And we will now request Mr. Vijay Barse to start his session. Maybe he can talk for 15-20 minutes, sir, and then we will come back with lots of questions our audience has asked. In that, we'll get opportunity to clarify many points, and also we'll get an opportunity to learn from the initiatives that you have taken and how we can probably do something as a bit of contribution from our side too, to the society that we live in. And that is the purpose of this Wise Views interactive leadership conversation series. Now, thank you once again, sir. Over to you. Please start your session.
Thank you very much. Good evening to everybody. I don't know, just now you are telling that this is the fantastic work. I don't know whether it is really fantastic work or I think that it is very grassroots work, being a social worker and being a teacher also. Whatever my eyes are looking and my brain is working and my hands can do, I try to do that things. As a teacher, when you just say that while going through my all these things, you have seen that in 2001, I have started the work between these Jhopparpatti children, slum children. I started because that time I saw that the children who were indulged in all the bad habits, bad things, bad habits. So that time I saw them that while playing with the plastic broken bucket, and nobody was doing any bad things, that no drugs, no drink, nothing like that. And there a teacher between me, I decide to give them at least 2 hours, good 2 hours in their life. I decide there that I will go with them, and then I bring one football and give them, and also go to another slum also. There I ask them whether they are ready to play the football match, football game. And in 2001, the both team come to my college ground, and there I spend, and they spend at least 3 to 4 hours with me on the ground. And that was enough for me, that between that 3 to 4 hours, nobody had any the drugs or a cigarette or wine or pickpocketing or any bad things. They were away from all these things. And that time I decided that I will do as a teacher, I must do these things, because I was getting too much big salary as a lecturer. I was getting a big salary, and that was very much enough for me. So I was thinking that I must use this my money for them, to bring them on the ground and be with them. So I decided, and I started. That is my mission, to go between them, among them, and bring them to me on the ground and keep them away at least for some time. At least for some times, they should be away from these bad habits. I started this mission. This is my mission. This is my mission. Basically, my missus and my son was not accepting these things. They were opposing to this idea that why you are wasting your money and why you are wasting your time between them, because this is not possible that the children from this slum area will accept your idea, and you think that they will, you can keep them away from these bad habits. But they are 24 hours, they are there, and whenever they will go back, they will do the same thing again. But it was my mission. I accept that things, that I will do it. I will, that was for with me only. So whatever I want to do, I will do that things. And the same first year only, when I gave these things in the newspaper, many teams come forward, and then we started that things in Nagpur as a local level tournament. That was the thing. What it was, that Jhopparpatti football tournament. In 2001, it was Jhopparpatti football tournament. I continue with that. The first year, the news persons, they gave the publicity, and it go to another districts also. Their inquiry was started, how you are doing and why you are doing, and can we do it, the same thing. So I went there, the other districts. I gave them this idea that nothing is going from our pocket. Only the one football you can put it. Only one football you can put it, and a number of players will come for play. Don't worry about it. When these players are on the ground, they will away from the bad habits. This was our mission. So we decided, we start second year also. We get the success. First year, 128 teams from Nagpur city participated. Second year, the 16 districts of Maharashtra, they participated. Third year, the
publicity goes towards all over North India. So other states started to inquire about these things. And then third year, I organized in 2003, I organized this on a national level. Idea was very simple. You just put one football and ask them to play. They come forward because the football is a very popular game in all over the world. Everybody likes the football. That's why I select the football. I never go any other games because other games are very costly. And football is a very, you keep one football that costs 600, 700 rupees. And I started with that. The third year, when the national tournament I organized, 16 states come forward. And then that was first national level tournament. When the national tournament, we are organizing the final, at the time of finals, the national and international media come to cover that final match, and then that international message goes to European football. When the European football was organized in the Europe, that was UEFA. They were organized that time. They came to know that something is different than this football. We are playing at FIFA rules football, and somebody is there. His football mission is very much different. He is claiming that he can change the life through football, and no rules, no major rules, no offside, nothing else. Simply you come to ground. Ground measurement is also whatever is available there. Yes, we will play there. So no offside rule, nothing like that, and we start with that things. We get success. 2003, European media come forward. Their INSP was their International Network of State Papers Organization. They come forward and they started to organize Homeless World Cup. Like this, 2001 we started, but within these 4 years only, this message goes to international level, and that INSP started for their vendors. They started for their vendors because the same problem they were facing. Their vendors, they went for this selling their newspapers, and they never come back because the biggest problem with them that the drugs. In European countries, drugs are there. So the seller vendors, they sell the paper and then they never turn up for 3-4 days. That was loss for them. So they decided that they think that we will try this thing. So they started in Italy, the first Homeless World Cup in Italy's Gothenburg. And it was started from 2001. But it was not known that something is happening in international level. So in 2006, when my son come back to India, and he find out that something is by calling Slum Soccer, it is organized in South Africa. So he get this invitation from Homeless World Cup, and I went there to South Africa. That was my first visit for Homeless World Cup. And from there in 2007, we are regularly going to participate in this Homeless World Cup. Last 2 years were Corona years, so they did not get the chance to organize this Homeless World Cup. But I hope that this year, if it no Corona, then it will be there. Homeless World Cup will be there. So the very simple idea is that, and without not a big amount, we organize these things. Up to 2008, my missus was also lecturer. She and me, we spend our salary for them. But from 2008 onwards, many sponsors come forward, even UNICEF, FIFA, UEFA, Street Football World, in India also, like Mahindra, this Sony, this Reliance, many people come forward and they ask us to do this type of not only football work, but through football, you organize the different projects. So we started to work with
we work in this EduKick. One project is of EduKick. Through football, we can teach the students English speaking and also mathematics. We give them the education through football, mathematics, and this English. Another project is of working for Defendum. DKG is that program. We bring this Defendum children to us. We give them the chance to come and join on the ground. There they mix up the gender equality, then the leadership. They get this education through football only. Then we have started this year the scholarship for higher education for this Defendum children. Then we also work, our volunteers work for menstrual hygiene. This is a national issue, international level work. So our volunteers goes towards the girls' colleges between them and they educate them through football only. Through football only, they organize some programs and they work between them. They educate them awareness of this menstrual hygiene. We also work for this AIDS awareness. AIDS awareness is our program through football only. These all things we do through football only. So AIDS awareness program. Then Shakti Girls in India, we work for girls. We call them, and the gender equality as well as leadership programs. We work for them. We teach them, and by this way we are working through football. We never bother for money or any other things. This is our social responsibility, and we are doing we are doing our social responsibility. That is our mission. This is our mission. So, but people they have the faith, total faith in us. That's why they come forward and they help us. There are many things to do. Just now I was up to 7 o'clock. I was with one of the MP called Dr. Vikas Mahatme. He was calling me that you come forward and do something for this alcoholic awareness about alcohol. You can do this. So people are coming because they might have faith in us that we can do. And I also promised them, yes, I will definitely work out for them. But the people are coming for this way. And God is using us. God is using my family, my missus, my son, my daughter-in-laws. They all are working. They all are helping with me. And I don't know whether I'm doing the correct one or not, because I don't have to submit my report to anybody. This is my mission, and I'm getting satisfaction through this. That's why I and my families are doing. Thank you very much. Thank you, sir. Amazing story. This is a journey of 2 decades and more. And all it started was with a reformist zeal that you wanted to do something at the grassroots level. Yeah. Leadership is something which someone sees what everybody sees, but does what nobody does. I think you have converted that opportunity into training them and bringing them onto the football ground. And that is the first sign of leadership. And that is what we have to learn. You have also changed the rules of the game by making it very simple for them, so that they all can come and play. So you made it extremely inclusive. And the third one is you have very beautifully built it up and scaled it up from 2 teams to 8 teams to 16 teams. And within various other states within the country and internationally, it has been scaled up extremely well to represent. And just in a matter of 4 years, I think it has become international. So that is something very nice lesson that we can learn in the manner it can be scaled up if you have a very strong reformist zeal and also the leadership skills that you possessed. Thank you. And working in extremely severe conditions, like when the money is not enough, the energy with which you have the commitment to this mission has fueled your journey, and you are very happy with whatever you have, but the results are multifold in the sense that the result is worth crores of rupees,
and though the investment is not that much. That is satisfaction with us. That is the greatest satisfaction you have had. And of course, as you have mentioned, subsequently you got many sponsors and then everybody liked the activity. But the value-added services are in terms of the education that you're providing through this and the championing of various other causes like girl child, deaf kids problems, and then menstrual hygiene education, alcoholism, AIDS awareness, so on and so forth. I think you have broad-based the appeal factor by focusing on several issues that are going to affect these people through, but all it started through football. So that's a fantastic expansion of the services that you have taken over. In one line, what you have done is you have helped these deprived children, underprivileged children to choose ambition over temptation. I think in one line, that is what you help, sir. It is a fantastic journey. We feel like touching your feet. You have brought football to the feet of these slum kids. That's a wonderful exercise that you've done, sir. Thank you so much. What we'll now do is, I will quickly request Professor Prasad to start the first cluster of questions, and then it will be much more interesting from here onwards. Professor Prasad, welcome, and please start the session. Hello, sir. Thank you, Professor Rao. Thank you, sir. It is indeed an honor to be on the same panel, as well as understanding what has been done. I think given the kind of country that we live in, there are a lot of people who belong to the underprivileged segment that you're referring to. You took an example of Nagpur. And I think if the country has to become productive, they are the ones who need to get energized. And in a simple idea, you have brought in a social innovation. The idea is so simple. I think that's the first thing that struck when the topic was when the theme was suggested, that this is so simple that people are not thinking about it. Football can change the life. Yes, absolutely. That is one, sir. Second is that you have used the credibility that you have built up through the soccer project, and you have multiplied it through many other projects. I think that is also very noteworthy, because it's serving as a platform to do many others. There are a lot of people with money, they are willing to fund you, but the ideas which are needed to reach across to the target group that you want are the ones which are missing, sir. Now going back to when you started, I'm sure you must have had this kind of zeal from early on. How did you get inspired? How did it start off? I mean, where did the flame get lit? How did it happen? What inspired you? See that the two things are there. One, I am from very poor family, and I have gone for my getting higher education to college and to get the job. It was very difficult things. So I have gone through the poverty, below poverty line. I came from that things. So I know what is to be needed to my society. I know these things. First thing. Second thing, I was teacher. Teacher is very respective post, and he has to do many things because he is teacher, and community respect him. Community look at him as not only the teacher, but also the parent of their student, their son and their daughters. We are in school. We are their like their mother, father. So they have the faith, and we have to act as per their will. As per their will. So we must take care of their son. If I think mine is, I think that like my head is having a very good computer in my brain, in my head. The brain is my computer, and my eyes are good. I can see many things, and my hands are. God has given me the strength in my hands. So when I saw something happening, I never go by closing my eyes from there. Because my eyes are open, I will stop there. I will take the decision, and I will do that things. Whatever I can do, I will definitely do it. That is basically, this is my style of work. I never go back from there. By closing my eyes, I will stop there, and whatever the help I can do, I will definitely do. The same thing with the children also, who were,
I was looking them from many years because that one slum was very near to my college, and also the bus stop was very near to next to main road. One side was slum and one side was bus stop. So whenever the passengers come down from the bus, these children's in morning time only they turn to that bus stop, and whatever the chance they get the things from there and run away in their slums. It was regularly I was looking at them for years, and I was just thinking that what can I do for them? What can I do for them? So one day when I saw this thing, a football playing with plastic bucket, my idea stuck to my mind. Yes, I can do that. I can give them at least 2 hours for them, and I will call them for 2 hours with me. I will be with them for 2 hours, and there I will try to teach them something good. I will try to teach them something that the teacher inside me was telling me, and I started this work. Excellent, sir. I think I am connecting to the idea ad. An idea can make a life, and the idea has made many lives here. I think it was there in you. It was there in you. You have narrated that you've been watching this and you had the zeal, and I think both these came together. And fortunately, it came with the right person, somebody who refused to listen to others near him and went ahead and did what he thought was right. Thank you very much, sir. I think this is something that inspires a lot of us, and I hope that it has a multiplier effect on many others who not only belong to the same profession but also want to do something for that segment, sir. This is grace on me of God. Absolutely, sir. Grace of God. So the next question is about our country. Education has been poor in the recent years. Maybe something has picked up, but for those who are disadvantaged, education is a huge challenge. On the other side, we have sports where for many decades we did not do well at all. Only cricket was the spoken about subject, and all the other sports were completely neglected. Today something is happening, but with these two sides where education is not accessible and sports also we don't have a great game. We did not have a great game. How do you see the furtherance of the value of sports? I mean, if this is a setting in which most of our country is in, how do you see the value of sports? How do you communicate it, and how do you help many of us communicate it? Can I speak in Hindi also? Absolutely, sir. Those who think, यानी एक तो बहुत बड़े इसमें सब सोचते नहीं है, कुछ सोचते हैं, इसलिए कि God has chosen them. You think it. दूसरे नहीं सोचते, तो उसके लिए बॉदर मत करे. You are the chosen man, and अगर आप चुने हुए हैं, तो आपको एक काम करना है. सभी को नहीं चुनता, ऊपर वाला गॉड जो होता है सबको नहीं चुनता, वो किसी को चुनता है, और जब चुनता है तो उसको वो अकल भी देता है, एक झील देता है. यस, आई एम विथ यू, यू स्टार्ट दिस वर्क. इसलिए कि ये जो भी दोनों चीजें जो है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये हमारे इतने बड़े वास्ट कंट्री में एक बहुत कठिन है. गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत अच्छी होती है, लेकिन लास्ट मैन जो होता है, जैसे एजुकेशन लेने के लास्ट मैन जो है, जो 4-5 साल का बच्चा है, वो वहां तक जाने के लिए एजुकेशन गवर्नमेंट और बच्चे के बीच में जो मशीनरी है, वो मशीनरी बहुत बुरी है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती. इसलिए गवर्नमेंट की जो बहुत सारी अच्छी आइडियाज रहती है, अच्छे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते. द सेम थिंग द अनदर पार्ट फॉर स्पोर्ट्स आल्सो. स्पोर्ट्स भी ऐसा चीज है कि इतने बड़े अपने कंट्री में स्पोर्ट्स का आज भी कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है कि हम लोग एक स्पोर्ट्समैन का लाइफ होता है ज्यादा से ज्यादा 28 से 30 साल तक का, और 30 साल तक वो बहुत खेलता है, 28 साल तक बहुत खेलता है वो, लेकिन उसका रिजल्ट उसको जो एजुकेशन से मिलता है, अगर उतने साल में 24-25 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, टेक्निकली ट्रेन हो जाता है, तो एक अच्छा जॉब ले लेता है. लेकिन वही एक अच्छा नेशनल लेवल तक भी अगर प्लेयर चले जाए,
अब ये जरूरी नहीं कि अपने कंट्री में हर एक शख्स क्रिकेट ही खेले। यहाँ क्रिकेटर को तो पैसा मिल जाता है, लेकिन फुटबॉलर को पैसा नहीं मिलता, हॉकी वाले को पैसा नहीं मिलेगा, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, इनको पैसा नहीं मिलता है। तो इस गेम की ओर में ध्यान नहीं है। सब लोग क्रिकेट की ओर में जाना चाहते हैं, लेकिन सब लोग फुटबॉल की ओर में नहीं आना चाहते। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो फुटबॉल का प्लेयर सबसे कॉस्टली प्लेयर है। तो अगर हमारे दिमाग में ये बैठ जाए कि हम इस लेवल तक के प्लेयर्स को पैदा करें, हम अगर चाहे कि हम स्टेट लेवल पैदा करें, हम नेशनल लेवल प्लेयर्स पैदा करें, तो डेफिनेटली वो भी एक अच्छी लेवल तक जा सकते हैं। हमने 2 वर्ष पूर्व एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जब हमने देखा कि बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे काम में हाथ लगाने के लिए आ गया है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जिन्होंने MBA वगैरह किया है, ऐसे वॉलंटियर्स फ्री ऑफ चार्ज हमको सर्विस देने के लिए जब आ गया है। और मैंने स्पेसिफिकली मैंने देखा कि ये मेरी मूवमेंट जो है, ये मेरा सन डॉक्टर विजय बारसे ये इजीली हैंडल कर रहा, तो मेरा दिमाग थोड़ा फ्री हो गया। और मैंने अभी ये सोचा कि आई विल वर्क फॉर, अभी तक तो मैंने वर्क किया है डेवलपमेंट थ्रू फुटबॉल, अब मैं वर्क करूंगा डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल, डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल। तो मैं 2 साल पहले मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया कि मैं ये स्लम में से बच्चों को आगे लाऊंगा फुटबॉल खेलने के लिए। इसलिए कि स्लम के बच्चों के बीच में एक बहुत अलग ये है, उनको उनमें स्टेमिना बहुत है, बीमार नहीं होते हो, उनको खाना नहीं मिला तो भी खेल सकते हैं। तो बाकी तो न्यूट्रिशियस फूड की तो बात ही छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन उनमें स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है। और चुन लो उनके बीच में से कोई स्किलफुल बच्चों को निकालोगे और तुम ट्रेन करोगे तो बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। मैंने ये देखा, मैं जब स्लम में घूमते रहा तो मैंने मार्क किया था। तो मैंने 14 साल के छोटे बच्चे, 14 साल से छोटे वाले जो बच्चे थे, इनको मैंने अडॉप्ट करना शुरू किया। 2 साल पहले मैंने 14 साल के 15 बच्चों को मेरे पास में लेकर आया, और मेरा मिशन ये है कि मैं इनको 5 साल के लिए मैं अडॉप्ट करूंगा। 5 साल में ये मेरे साथ में रहेंगे, और इनका एजुकेशन, इनका रहना, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, फुटबॉल ट्रेनिंग, ये सब मैं करूंगा। इन्होंने अच्छे प्लेयर बनना है। एजुकेशन तो कंपलसरी है, वो स्कूल जाएगी, लेकिन फुटबॉल ट्रेनिंग इसलिए कि मेरे पास में इंटरनेशनल कोचेस भी आते हैं। जब इंटरनेशनल कोचेस आते हैं तो उनका फायदा इंटरनेशनल लेवल पे लड़कों को लाने में ही होगा ना, किसी ऐसे सबको देखे तो नहीं होगा, कुछ स्पेशली सिलेक्टेड। तो मैंने वो स्टार्ट किया और बच्चों को आगे लाया। 14 साल के बच्चे तो नेचुरल है, उनका स्कूल में एडमिशन होना है। तो मैंने 14 साल के बच्चों के लिए टारगेट रखा, फर्स्ट ईयर जो है इन्होंने कम से कम स्कूल का डिवीजन लेवल का टूर्नामेंट जीतना ही चाहिए। सेकेंड ईयर में जब आते हैं, 15 साल के हो जाते हैं, इन्होंने स्टेट लेवल का टूर्नामेंट जीतना ही चाहिए। थर्ड इसमें जब आते हैं तो इन्होंने 16 ईयर्स के हो जाते हैं, 16 के 15 के, इन्होंने नेशनल लेवल का टूर्नामेंट जीतना ही चाहिए। फोर्थ ईयर जब आता है तो ये 17 तक आ जाते हैं, 17। तो ये फोर्थ ईयर में जब आ जाते हैं तो इनमें से कोई बच्चा मेरा नेशनल लेवल पे, ये ISL वगैरह जो है सुपर लीग जो चलती है, इंडियन सुपर लीग, इसके अंदर में मेरे 1-2 बच्चे कम से कम सिलेक्शन तक तो पहुंचने चाहिए। और 5th ईयर में मेरे इस स्लम सॉकर की फुटबॉल एकेडमी से मैंने इंडिया के सिलेक्शन के लिए एक तो भी बच्चा देना चाहिए। ये मेरा मिशन है, ये मेरा मिशन है। मैंने जो एकेडमी बनाई उसका मिशन है। और लकीली फर्स्ट ईयर में ही मेरे बच्चे डिविजनल लेवल नहीं, स्टेट लेवल टूर्नामेंट जीत गए। दैट वाज ऑनर फॉर मी कि बच्चे मैंने स्लम में से लाए, और जिनको ना तो उनके पास ठीक कपड़े थे, ना एजुकेशन था, लैंग्वेज तक नहीं थी। मेरे पास बच्चे आए थे बंगाल के, झारखंड के, उनको तो कोई हिंदी मराठी यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको स्कूल में डाला। टीचर से कहा कि टीचर्स इनको संभालो आप, इनको लैंग्वेज नहीं आती है, ट्यूशन हम दे देंगे, लेकिन ये बच्चों का रैगिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने लोकल बच्चे और इनके बीच में रैगिंग नहीं होना चाहिए, आपने इनको संभालना चाहिए। मैं तुम्हारे स्कूल को एक नेम दूंगा पूरे स्टेट लेवल तक। और फर्स्ट ईयर में जिस स्कूल में थे वो स्कूल स्टेट चैंपियन बन गई। 5-6 बच्चे नेशनल के लिए, स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट हुए। एक बात है कि जब हम ध्यान देते हैं, अगर हमारा मिशन है तो उसके पीछे हम पड़ जाएंगे तो सक्सेस डेफिनेट है। अगर आप जो प्रयास करते हैं, अगर उसमें कोई कमजोरी नहीं है और आप उसके पीछे पड़ोगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। ये मैंने मेरे लाइफ में देखा है।
तो गेम तो मेरे लिए कोई फुटबॉल से ही मैं अभी तक लाया हूँ, और मैं फुटबॉल को इंडिया के लिए भी देना चाहता हूँ। प्लेयर्स मेरे एकेडमी से इंडिया के लिए प्लेयर देना चाहता हूँ। आपको से बच्चे आते हैं दूसरे एकेडमी से, जब लड़ते हैं तो उनमें भी टॉप होते हैं। मैंने ट्राई किया 2 साल पहले मुंबई में, एक बहुत बड़ा एकेडमी थी रिलायंस की एकेडमी, उसमें मैंने मेरी टीम लेके गया था। वहां के तो बड़े बड़े बच्चे थे, उनका कोच इंटरनेशनल था, लेकिन मेरे बच्चों ने उनको हराया था। जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें मेरे स्लम के बच्चों ने उनको हराया था। तो उनको भी बहुत अच्छा ये लगा था कि देखो स्लम के बच्चों में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेमिना है, शहर के बच्चों में नहीं रख सका। जबकि हम उनको एक मुट्ठी चना और एक अंडा ही देते थे। उनका न्यूट्रिशियस फूड यानी जो रेगुलर हम खाते वो तुम भी खाओ, और तुम प्रैक्टिस कर रहे इसलिए एक मुट्ठी चना खाओ और एक अंडा लो, और कभी एक आधा केला दे दो। इतने इसके ऊपर में बच्चे, ये स्लम के बच्चे जो है ये बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। इंडिया में ऐसा है कि फुटबॉल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ध्यान इस पे नहीं गया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ग्रास रूट इंटरनेशनल जो फीफा है या एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, ये चाहते हैं कि हमने ग्रास रूट पे फुटबॉल डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। और जब ये काम करते, एक बात है वो पहले जैसा नहीं रहा कि आप खेलोगे तो बड़े नहीं बनोगे। अब तो खेलोगे तो भी आप बहुत बड़े बन सकते हो, और खेलने के साथ में हम एजुकेशन के ऊपर में भी जहाँ भी जाते हैं हम प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे सबके सब पढ़े। So this is fantastic. This is worthy of a Harvard case. जो आपने target group चुना है, the kind of target group that you chose, it came from your passion, and then you have built a full dream around it. And I think today you're extending it to how sports can serve as a well-earning platform and a recognition platform at a global level, which is true. And you're trying to communicate that, and you're building the full support chain to reach there. I think in the first stage you demonstrated that this is possible, and the children from this kind of this kind of localities and these kind of families will be able to do far better than anybody else. You have demonstrated that, and you demonstrate that at scale. And I think next you said that development through football, development of football. So very easily said, sir. You used very, very simple terms. One preposition has changed, that's all, through and off. But the entire dimension has changed because of that. And I think the third thing that your adoption of children, because now you have moved on to that. I think you've configured the way in which you need to take them to the next level. And your goal setting paths, I think it is always, it is a I think management gurus, management students need to learn from this. I think you have very, very clearly specified what is possible, and I'm sure that you are achieving what needs to be done. Sir, I think this is really a case study which somebody, one of the best case study schools in the world need to do. We also do case studies. I think Professor Sudhakar can coordinate with the team and the team there and see what we can do with this. Yeah, sure. I think we should do that. We should write a case. Sir, the next question is, how do you pitch an idea, sir? Because you had to go through a lot of trouble. You have, when you started from what you noticed to where you got to right now, and as well as the next level that you're taking up now, communication is a very important dimension of what you have achieved. So how do you take care of this, sir? How do you pitch an idea? How do you think people listen to you? How do you get people to get convinced, whether it is parents of the children who are coming to you, or whether it is the school which is giving you facilities, and particularly in the initial years? How did this happen, sir? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि लोगों ने तुम पे विश्वास करना चाहिए। आप गलत नहीं करते, ये विश्वास लोगों का होना चाहिए, चाहे वो स्लम का हो, चाहे मिस्टर सुधाकर का हो, चाहे प्रोफेसर का हो, चाहे किसी बड़े आदमी का हो, किसी का भी हो। एक अगर विश्वास आपके बीच में, आप मेरे पे विश्वास करते हैं तो आप परमानेंट विश्वास करेंगे। और इसलिए विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने विश्वास करना चाहिए, हम पे विश्वास करना चाहिए लोगों ने कि हम गलत नहीं करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे। हमको बड़े फाइनेंसर भी आएंगे, उनका भी हम पे विश्वास रहेगा, हम गलत नहीं करेंगे। इसलिए कि हम रिटायर्ड, आप प्रोफेसर है, हम भी रिटायर्ड हुए, हम लोगों की जरूरत बड़ी नहीं है, हम लोगों को जरूरत बड़ी नहीं है। हम जिनके बीच में काम करते हैं उनकी जरूरत बड़ी नहीं है। वो सिंपली जो खाना अपने को रोज मिलता है,
हम अच्छा खा सकते हैं, लेकिन उनके साथ में उनके लेवल पे जाके खाना पड़ता है, उनके साथ में खाना पड़ता है। तो वो जो एक विश्वास कि ये हमारे साथ में खाते हैं, हमारे साथ में आते हैं, हमारे बस्ती में आते हैं, हमारे स्लम में आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, ये जो एक विश्वास है, हमारे लिए दिन भर ये सोचते हैं कि तूने खाना खाया क्या, तूने बेडशीट धोया क्या। ये जो छोटी छोटी सी चीज है, इससे बहुत बड़ा विश्वास उनमें और हमारे बीच में है। पहले तो जरूर इसमें हमको बहुत बड़े तकलीफें आई है। पहले पहले एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मनी, पैसा। फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करने में कोई पैसा नहीं देता, फुटबॉल ऑर्गेनाइज करने में कोई पैसा नहीं देता, तब भी नहीं देता था। आज भी फुटबॉल ऑर्गेनाइज करने जाएगी तो पैसा नहीं मिलेगा, नहीं देगा कोई। तो तब मेरा सेकंड पार्ट जो था, मिसेस बारसे जो थी, उसकी पूरी सैलरी हमने तो पूरा लगा दिया, उसको पता भी नहीं चलने दिया। वो हमेशा अपना लोन लेकर आती थी कि सोसाइटी का लोन लिया, प्रोविडेंट फंड का लोन लिया। 2008 तक हमने उसका पूरा पैसा इसमें लगाया। इवन हमारा बेटा जो है आज डॉक्टर विजय बारसे जो है, उसका भी पीएचडी खत्म हुआ तो वहां से निकल गया कि पापा आपके पास तो हमारे लिए भी कुछ रहने वाला नहीं है, आप भी साइकिल से चलते हैं। हमको भी वही बात बोलते हैं आप कि हालांकि दोनों लेक्चरर है तो सैलरी बड़ी है, बच्चों को कार मिलनी चाहिए, अच्छी नई मोटरसाइकिल मिलना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए अपना। पापा आप इन बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं कि कुछ आपको। तो मैं हमेशा बोलता था बेटा अपनी जरूरत कितनी है, अपनी जितनी जरूरत है उतनी चीजें है ना। हम साइकिल पे चल रहे इसलिए फिट है ना, हम बीमार हुए क्या, कभी नहीं हुए, हमारी चिंता मत करो, हम कभी बीमार नहीं होंगे, इसलिए कि हम साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं। और जिनके लिए काम करते हैं उनके ब्लेसिंग सबके साथ में है। वो जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनको किसी ने आज तक पूछा नहीं होगा, उनको हम पूछते हैं, अपने साथ में अपने सोफा पे बिठाते हैं, अपने साथ में खाना खाते हैं वो लोग। तो इनकी ब्लेसिंग इनकी इससे निकलती है ना, ये ब्लेसिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और वो विश्वास जब उनका अपने साथ में हो गया, तो ये जो ड्रगिस्ट थे, ये जो शराब थे, ये जो चोरी करने वाले थे, ये भी एक अपने पे विश्वास करने, अपन जो बात बोल रहे उनको जो समझा रहे, इजीली उसको एक्सेप्ट करने लगे, वो चेंज उनमें आने लगा। पहले लेकिन बहुत कठिन गया, पैसा नहीं था। उसके बाद में लोगों को इसके प्रति ऐसे लगता था कि हम कोई ड्रामा कर रहे हैं या पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, लोग बोलते थे। मीडिया के थ्रू ये बोला जाता था, हमको नाम रखा जाता था कि आप ऐसा करते हैं। कभी कभी तो किसी टीम मेंबर को भी ऐसे लगा कि इनको बहुत पैसा मिलता है, फॉरेन से फंड आता होगा इनके पास में, इसलिए करते हैं, कोई अपनी जेब से थोड़े ना करता है। लेकिन एक बात थी कि ये मेरा अपना ओन मिशन था। मेरे को किसी ने बोला नहीं था कि मिस्टर बारसे यू डू दिस थिंग्स, किसी ने मेरे को बोला नहीं था, दैट वाज माय ओन मिशन। और जब मेरा मिशन है तो उसको मैंने पूरा करना है, मैंने दूसरे की ओर में नहीं देखना है, मैंने कभी किसी की ओर में नहीं देखा। और आज भी जो मेरे को लगता है, मैं मेरे बेटे से, मेरी मिसेज से डिस्कस करता हूँ कि ये ऐसा करना है। पहले तो उनको भी इसका महत्व लगता नहीं, जैसे फुटबॉल एकेडमी की बात किया मैंने पहले बेटे से, तो 2 साल पहले उसको आइडिया अच्छी नहीं लगी थी, पापा एक ही काम करेंगे ना। बोला नहीं बेटा, अब ये करने के लिए मैं तुम्हारे हाथ में हैंड ओवर कर रहा हूँ ना। और लकीली अपना मिशन हैंड ओवर करने के लिए प्रॉपर आदमी लगता है, और वो प्रॉपर आदमी मेरा बेटा यूएस का जॉब छोड़कर आया था। इतना बड़ा जॉब छोड़ना मजाक नहीं थी, लेकिन उसने एक बात बोला था, पापा मैं यहाँ था तब तक आपको नहीं समझ सका था कि आप क्या काम करते हो। मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि जब आपके साथ में ये ऐसे गंदे कपड़े के, गंदे सर को तेल नहीं, ऐसे लोग अपने घर के अंदर आके सोफा पे बैठते हैं और आप उनके बीच में बैठते हो, और आप ड्यूटी से आते हो तो खाना भी नहीं खाते हो, इनके साथ बातचीत में लग जाते हो। मेरे को अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए वो चले गया था। लेकिन वहां जब उसको पता चला कि भाई व्हाट इज माय फादर डूइंग, वहां रियलाइज हुआ उसको, वहां से उसने मेरे को सॉरी बोला, पापा नहीं आप बहुत अलग काम कर रहे हैं। और ये जो भी आपने बोला ना केस स्टडी, उसने मेरे को ये बोला था, पापा आपको खुद को नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हो। बोली ये लोकल लेवल से लेके नेशनल लेवल तक आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, कोई तो पैसा देता नहीं है। ये कैसे आपकी पहचान है, केरला में भी आपकी पहचान है, कश्मीर में पहचान है, झारखंड में पहचान है, ये कहाँ से आपके पास में सब में, यानी ये कैसे क्या मैनेजमेंट है आपका, कैसे आप इतने बड़े इस पर काम करते हो। मैं आपके साथ में आके सीखना चाहता हूँ। बोले मैनेजमेंट सीखने के लिए मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। 1 साल यहाँ आया, फिर उसने उसकी वेबसाइट पे क्या वो वेबसाइट वगैरह तैयार किया, ये सब तैयार करके वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले गया। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि मेरा एजुकेटेड बेटा जो है, उसने मेरा ये जो स्लम सॉकर है,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया है एंड आई नो दैट ही विल डू इट सक्सेसफुली, क्योंकि उसने पूरा देख लिया है। और जो बड़ी सैलरी का जॉब छोड़ के आके ऐसी जगह काम करता है तो डेफिनेटली वो बाय हार्ट ही इज डूइंग हिज वर्क। और फिर अभी उसने मेरे को बोला, पापा आप ये डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल की जो बात सोच रहे हैं, ये मैं इसके लिए आपके लिए मदद करूंगा। बोले मैं लाऊंगा आपके लिए स्पॉन्सर, आप अपने पैसे से कर रहे हो ना। बोले इनको जो खिला रहे बहुत बड़ी भारी बात है। बोले इनकी सब चीजें आप देखते हो। बोले आप उनका बेड देखते हो, उनका कॉट देखते हो, उनकी चेयर देखते हो, उनका स्टडी देखते हो, उनकी किताब देखते हो, कॉपी देखते हो, ये सब पेन पेंसिल से लेके आप उनकी एजुकेशन तक सब चीजें देखते हो, उनके इवन उनके फेस्टिवल देखते हो। मैं तो क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन के तुम्हारे लिए कोई काम करूंगा। मेरे लिए इंसान सबसे महत्वपूर्ण है। एक इंसान बनना चाहिए। तो मैं हर एक के त्योहार मनाता हूँ, मैं ईद मनाता हूँ, मैं दिवाली मनाता हूँ, मैं राखी बांधता हूँ, सब चीजें इसलिए कि पहले इंसान बन जाओ। तुम अगर इंसान समझ गए तो सब कर दोगे। कोई ये जरूरत नहीं कि तुमको क्रिश्चियन बन के क्रिश्चियन बनाने की, नो, बिल्कुल नहीं। वो तुम पे विश्वास क्रिश्चियन ने करके थोड़ी आया, वो विश्वास किया उन्होंने एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा आदमी है करके तुम्हारे पास में वो लोग आए हैं। तो यू बिहेव लाइक दैट, ए गुड मैन, ए गुड समरिटियन यू शुड बी। तो ये काम अब मैं करता हूँ, मेरे बेटे को भी लगता है, वो भी इज हेल्पिंग मी। और ये जो मेरा दिस इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट दैट आई विल प्रोड्यूस द नेशनल लेवल प्लेयर्स, नेशनल लेवल फुटबॉलर फ्रॉम दिस स्मॉल एकेडमी। ये जो मेरी छोटी सी एकेडमी है, इसमें से मैं करूंगा। मेरे पास ग्राउंड नहीं है, आई डोंट हैव द लैंड, आई डोंट हैव द मनी, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस बात की चिंता नहीं किया है कि मैं पैसे से मेरा काम रुकेगा। मेरे पास में जो इंटरनेशनल करके बच्चे आ जाते हैं, ये बच्चे जो है, ये बच्चे पढ़ना चाहिए और हायर एजुकेशन के लिए बड़े डोनेशंस लगते हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, बेटा यू डिसाइडेड व्हाट कोर्स यू वांट टू डू, और बाकी रिमेनिंग आई विल अरेंज। और मैं नहीं जानता कि पैसा कहाँ से आता है, लेकिन उनका सबका डोनेशन, उनकी सबकी फीस, उनका सब चीजें ऑटोमेटिकली गॉड सेड मी। अभी दुनिया में है, जैसे आप लोग हैं, आप सोच रहे हैं व्हाट कैन आई डू फॉर दिस मैन। मैं थोड़ी सोचता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं सोचने की, ना ना ना, ना मेरे को ये जरूरत नहीं है सोचने की कि कौन आएगा मेरे लिए। अरे मेरे को मालूम है, जिनको अच्छा लगता है, लोग देखते हैं ना, लोग सुनते हैं ना, लोग पढ़ते हैं ना, लोग अपने प्रीवियस लाइफ को देखते हैं ना, इतने साल से, तो ये चिंता नहीं है। I'm not worried about these things. This is absolutely marvelous, sir. I think first thing that you mentioned is about trust and belief in what people need to believe in you, and particularly when you have gone to a segment who find you very different from them, though you are brought up there, you are a professor, you earn money, and then you behaved like them, you ate like them, you became one of them. And I think that's a very, very important principle for anyone who wants to undertake a particular mission, being one of those for whom you are delivering that particular mission. This is one key point, sir, that we are able to take away. The second is, I think, there are a lot of values that you have talked about. There are underlying values in what you're talking about, and I think that has also helped to in the success of this particular venture. The third thing is, one of those who have commented, Devang Chaya, I think says Professor Barse's USP is simplicity of his ideas and being an integral part of the social warp and weft of his interventional communities. I think the simplicity of the idea and the fact that you fit very well into the context. You are a sports professor, you have chosen football, you live and eat like them. I think both in our language, what you say is the idea as well as the context in which the idea has come, both are matching very well. Thank you, sir. There are three more questions in this cluster, but I am stopping here and handing it back to Professor Rao. Thank you very much. बहुत बढ़िया साहब, बहुत एंजॉय किया हमने, तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। Thank you, sir. Sir, next cluster of questions are something like this. आपका जर्नी बहुत लंबा रहा, 2 डिकेड से आगे, लेकिन एक मूवी अभी जो बनी है झुंड, इसका क्या इम्पैक्ट रहा? ये तो आपके लाइफ के ऊपर बनी है, अमिताभ बच्चन ने उनके उसमें बड़ा रोल किया, आपका रोल प्ले किया है, तो what do you think is the impact, or who do you think are benefited because of this movie? Have you seen this movie? No, sir, I have not seen. Very bad. Bad luck for me. No, we will see later. We will, sir, we will, definitely we will. तो ये मेरा 2 decades का जर्नी जो है, ये
अमिताभ बच्चन ने और वो डायरेक्टर जो नागराज मंजुले है, इन्होंने जैसे कि वैसा 3 घंटे में इसको कर दिया है। एक बहुत बड़ा मैसेज इसके थ्रू गया है। 20 साल में जो मैसेज मैं भेज नहीं सका था, मैं था जरूर, यानी लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक, यूनिट से फीफा तक पहुंचा था, लेकिन मैं लास्ट मैन तक नहीं पहुंचा था। लास्ट मैन तक नहीं पहुंचा था। मेरा मैसेज जो है ये अमिताभ जो इतने बड़े नेशनल हीरो है, इस यानी शताब्दी का इस यानी हीरो है, इसके कारण से, ये झूठ मूवी के कारण मेरा मैसेज जो है, यस वी कैन डू समथिंग, वी कैन डू एनीथिंग। जो हम सोचेंगे कर सकते हैं, खाली आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए और आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप सोचोगे तो ये काम कर सकते हो। झूठ ने दिखा दिया, यस वन टीचर कैन डू, वन टीचर कैन टर्न द लाइफ ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रंस, ये दिखा दिया उसने। तो ये जो मेरा मैसेज है, ये झूठ के द्वारा ही लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक चले गया, क्योंकि अमिताभ के चाहने वाले तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है। अभी तो ये पिक्चर बाहर देशों में भी दिखाई जा रही, मैंने सुना। तो इसका मैसेज जो है, मेरा मैसेज जो है, ये सब तक पहुंचा है, और ये मेरे लिए इसकी उपलब्धि है। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है। Great. I think what you mentioned is that this movie has taken the message to the last man. Yes. And it has strengthened the resolve of a large number of people that if they wish to do something, they can actually achieve with commitment, with zeal and determination, they can achieve their goals. That's the message. Fantastic, sir. Thank you very much for that. So the second question is, what do you think India needs to do in order to get more number of, say, Olympic gold medals? हमको ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा, और गेम्स कोई भी हो, एकदम स्टार्ट हो, जंगल की आर्चरी होगी, या तो फुटबॉल होगा, या तो कोई भी गेम होगे, ये गेम को एक मिशन के जैसे लेने वाले लोग का आगे आने चाहिए। जो मिशन करके लेगा वो इस पे काम कर सकेगा। अगर हमको ओलंपिक में जाना है तो इसको मिशन ही बनाना पड़ेगा। केवल पैसा ही डालने से मिशन सक्सेस नहीं होता है, झील होना चाहिए, झील कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा। जो कोचेस है हमारे, जो एकेडमीज है हमारी, उनके बीच में से जो भी लोग काम करते हैं, उन्होंने ये अपने इसमें बिल्कुल पक्का कर लेना चाहिए कि मैं इस प्लेयर को, उनको समझ, जो कोचेस है वो प्लेयर को समझता है, उसके एक स्टेप देख के वो समझ जाता है कि इसमें कितना स्किल है। अगर उसको देख लेता है तो उसके पास में उसका से बड़ा ये होना चाहिए। और आजकल तो सारा साइंटिफिक स्पोर्ट्स साइंस है आजकल, पहले तो कोई साइंस था ही नहीं, आज स्पोर्ट्स साइंस है। इससे वो पूरा कैलकुलेट कर लेता है कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेमिना है, क्या इसके एलिजिबिलिटी है, सब वो देख लेता है। तो इसको सबको मिला के उसने उसी प्लेयर को आगे लाना चाहिए। जिस प्लेयर में ये सब है, ये कर सकता है, उसको सिलेक्ट करना चाहिए, और उसको सिलेक्ट करने के ऊपर में फिर उसके पीछे उतनी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम उतने प्लेयर सिलेक्ट करके, अगर हम इसको एज ए मिशन करके करेंगे, तो हम ओलंपिक को और भी प्लेयर दे सकेंगे। 100% है। अरे हम जैसे जिसके पास कुछ नहीं, हम कहते कि इंडिया के लिए प्लेयर देंगे। अगर हम बोल सकते हैं, मामूली सा आदमी बोल सकता है, तो जिसके पास सारी फैसिलिटीज है उनके लिए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं, खाली उनका झील और एक टारगेट होना चाहिए। विदाउट टारगेट नथिंग विल बी हैपन। Amazing, amazing, sir. All you're saying is it is not the money that is going to make difference, but it is the missionary zeal with which our government and sports authorities will have to take up this challenge, and then we will definitely achieve gold medals in Olympics. Definitely. Amazing, sir. Amazing suggestion that you have given. So one more question, and then I will ask the members in the audience to raise their hand if they have any question. Very, very limited time we have, but we can take 1 or 2 questions from the audience as well. But my question now is that in the entire journey in the last 2 decades, what are the 2-3 challenges that you faced in your journey while setting this as a mission, while promoting sports as a social mission? What impediments, what difficulties and challenges did you face, sir, and how we can remove those challenges? सबसे पहला तो यह है कि तुम्हारा खुद पे विश्वास होना चाहिए। मैं 2007 में
मेरी टीम डेनमार्क से वापस आई थी, कोपेनहेगन से वापस आई थी। आने के बाद में एक प्लेयर ने मेरे पे आरोप लगा दिया था कि तुमको हर एक प्लेयर के पीछे $2000 मिले हैं। तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो इससे बड़ी दुखित हुई थी कि देखो आप इनके लिए काम करते, खुद के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, और ये ऐसा आरोप लगा करके। फिर मेरे को ऐसे पता चला था कि लोग, जो फुटबॉल फेटर्निटी है, वो तुमको इस रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए कि तुमने बड़े शॉर्ट पीरियड में, ये 4-5 सालों के बीच में तुम इंटरनेशनल चले गए, और वो रेगुलर इतने 50 साल से काम कर रहे हैं, वो नागपुर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा ये था। तो मेरे को भी थोड़ी देर के लिए लगा था कि नहीं, मैंने छोड़ देना चाहिए। सही में ये ऐसा काम करना है जिसमें अपने को बेइज्जती होती है, तो अपने छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसी समय मेरे पार्टनर ने, यानी मेरे मिसेस ने मुझे ये कहा था, एक बड़ा अच्छा ये दिया था उन्होंने कि देखो, ये ऐसे एक बात ध्यान में रखना कि जिस पेड़ के ऊपर में फल रहते हैं ना, उसी को पत्थर मारा जाता है। जिस पे फल नहीं है उसको कोई पत्थर नहीं मारेगा, और तुम फल देने वाले पेड़ हो, तुम इनसे डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुमको मदद करूंगी, बिल्कुल नहीं सोचना। फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट ईयर में हमको हमारी लैंड मॉर्गेज करनी पड़ी थी, ये जाएंगे बच्चे, टीम जाना चाहिए, इसलिए लैंड मॉर्गेज करनी पड़ी थी। तो ऐसी जो ये बातें आती है, लेकिन एक बात है कि अगर आप फर्म है, आपने ये सोचा है ये मेरा मिशन है, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, तो तभी झुंड जैसी फिल्म बन सकती है। अगर मैं वही रुक जाता तो मैं आपके साथ आज नहीं बैठ पाता था, अगर मैंने वही रुक जाता। तो ये ऐसे हर्डल्स आते हैं, फैमिली के बीच में से आते हैं कि अपना बच्चा अपने को छोड़ के चले जाता है, पापा आपके पास में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो छोड़ के चले जाता है। तो ये ऐसे फैमिली के से आते हैं, बाहर से आते हैं। हमको तो गवर्नमेंट से इसलिए नहीं आया कि हमने कभी गवर्नमेंट की ओर देखा ही नहीं। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट से हमको अननेसेसरी क्वेश्चन ही ज्यादा हो गए, हमारा काम तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है उसकी ओर में देखो ही नहीं, जो कुछ है ये हमारा मिशन है, यू हैव टू डू इट, इफ यू वांट टू डू इट, अदरवाइज क्लोज दिस स्लम सॉकर। हमको किसी को बताने थोड़ी जाना है। तो इसलिए हमने कभी किसी को बताया नहीं, और कुछ नहीं, ऐसे छोटे मोटे हर्डल्स आते हैं, उसको फेस करने की बहुत ये, यानी हमें वो ये है, पावर है कि हम उसको फेस कर लेंगे, इसलिए कि हम गलत नहीं करते। Yes. हम किसी का विश्वासघात नहीं करते। You will rise above allegations if you have the self-belief that you are not doing anything wrong. Yeah. And that alone will strengthen your resolve to keep on achieving your goals. I think that's an amazing way of helping us learn how to actually face these hurdles. There are hurdles in every work that you do, and so much so in the work that you are also doing, there'll be hurdles either from the locality or from the football fraternity. And also another thing is, you have never looked for anything from government, and therefore you have not gone out on yourself to tell anyone purposefully to help, but you kept on doing good work and good things kept on happening on its own. I think that's an amazing self-belief story that you have displayed for us, sir. Thank you so much. What I will do now is there any question? Has anybody raised the hand? I don't see that, but there are several comments everyone has asked, but I'll move to my next question, and that is, sir, I will also summarize after this, but this question is, sir, we know that sports build bonding, camaraderie, friendship. On the other hand, it is also possible that this friendship will happen only within the team, but it also leads to some kind of rivalry with the other teams, with the opponents. How do you help us see the situation? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स के मैदान पे ब्रदरहुड तो बढ़ता ही है, लेकिन एक बात और विशेषता है कि स्पोर्ट्स के मैदान पे सभी, कोई किसी से नहीं पूछता कि तू कौन से कम्युनिटी से आया है, वो कंधे से कंधा लगाते हैं, खाते एक टेबल के ऊपर में, रहते एक बेड के। जब आपको सोना है तो किसी सेंटर पे जाओगे तो एक बेड पे शायद 2 भी सोते हैं, तो ये नहीं पता रहता कि ये कौन से कम्युनिटी का है। ये जो एक बहुत बड़ा, जिसकी आज जरूरत है, आज जिसकी जरूरत है कि तुम उधर सोचो मत, ग्राउंड जो है, ये फील्ड जो है, ये सबको इक्वलिटी देता है, इक्वलिटी टू थिंक, इक्वलिटी टू सब चीज में आप इक्वल हो, कोई प्लेयर बड़ा नहीं होता। और जैसा आप बोलते हैं कि ग्राउंड पे अपोनेंट टीम के साथ में
वो जो होता है वो केवल जब मैच चलते रहती तभी रहता है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, क्या अपना अपोनेंट अगर इंजर्ड होके गिरता है तो ये अपनी टीम सब जाके उसको उठाने के लिए जाती है, सब दौड़ के जाते हैं। खेल में कोई एनिमिटी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। इसीलिए बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। यस यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर, थैंक यू वेरी मच सर। आगे इसका क्या होगा, ये मिशन आगे ले जाने के लिए व्हाट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर? जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट थ्रू फुटबॉल, इसके लिए मेरी सेकंड जनरेशन जो है इन्होंने अपना पूरा इसको ले लिया है। दे आर डूइंग दैट थिंग्स। मैं खाली ग्रास रूट देखता हूँ, बाकी सारा ये डॉक्टर विजय बारसे एंड वो लोग ही देखते हैं, पूरे वॉलंटियर जो है वो देखते हैं। और हम लोग केवल नागपुर में ही नहीं, लेकिन चेन्नई में हमारा काम है, हमारा सेंटर कलकत्ता में है, हमारा सेंटर दिल्ली में सीमापुरी में है, पूना में है। इतनी जगह जब वॉलंटियर्स आगे आके काम कर रहे हैं तो मेरे को भी चिंता नहीं है कि ये बंद होगा, ऐसे कोई चिंता नहीं है। अब जो डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल जो है ये मेरा नेक्स्ट मिशन है। अब ये मिशन करते समय इतनी बात तो जरूर है कि आपके थ्रू मैं अपील भी करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल का एक अच्छा पूरा ग्राउंड में तैयार कर सकूं। फुटबॉल का ग्राउंड यानी होता यह है कि केवल फुटबॉल ग्राउंड नहीं होता, उसके साथ में कुछ दूसरे वार्म अप गेम्स होते हैं। वार्म अप गेम्स के लिए जगह होना चाहिए, एक स्विमिंग टैंक होना चाहिए, एक अच्छी एकेडमी, अच्छी स्टेइंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए अच्छा। तो ये एक बड़ा ये है। मैं आज तक रुका नहीं हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं करता हूँ। एंड आई विल डेफिनेटली डू इट विद इन दिस नेक्स्ट 5 years. You will see that what the Vijay Barse is saying. Yes, if God ने मेरे को रखा यानी जिंदा, तो आप मेरे से फिर मिलेंगे और तब आप मेरे को मेरा कांग्रेचुलेशन कहेंगे मेरे को इस बात के लिए। इंशाल्लाह आप जो कह रहे हैं वो सच होना चाहिए। आई एम श्योर यू विल वॉक द टॉक। आई सी दैट स्ट्रेंथ, दैट स्टीली स्ट्रेंथ इन योर वर्ड्स व्हेन यू से दैट whatever Mr. Vijay Barse says, it will happen. So I'm sure you will work very hard to make it happen, and that is the lesson for us. Thank you, sir. What I will do now is I will request Professor Prasad if he has any question to ask, and then I'll come back for wrapping it up. Professor Prasad, for you. Yes, there are a number of questions, but I'll choose one as we are running short of time. And this is now you're in the stage where you want to take players global. You want to make players who will represent India global. Now, in order to track the development, measure their progress, you have already set goals. And coach, how do you see this happening? What do you plan to do? What are you doing about this, sir? मेरे कोचेस और मैं, हमारे जो कोचेस है, एक दो कोचेस हम लोग, जैसे फुटबॉल इंडिया में वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उधर मणिपुर, सिक्किम करने फुटबॉल है, इधर साउथ में केरला में फुटबॉल है, इधर आप जाओगे तो गोवा में फुटबॉल है। तो मेरे कोचेस सभी वहां जाएंगे, दो कोचेस हर जगह जाएंगे, वहां उनके बीच में 15 दिन 1 महीना रहेंगे, और उनके बीच में से हर स्टेट से, हर जगह से ऐसे 3-3, 4-4 बच्चे, ऐसे 20 बच्चे हर साल में हम आगे लाएंगे। 20 बच्चों को हम चुन के लाएंगे। हमारा टारगेट उतना ही, हम 20 बच्चों की केयर कर सकेंगे, इसलिए कि 5 साल में 100 बच्चे हो जाने वाले। इतने लोगों के रहने की अरेंजमेंट भी करनी पड़ती, खाने पीने की सब, तो हम इतना कर सकते हैं। तो हम 20 बच्चों को इस साल अडॉप्ट करेंगे। अभी है हमारे पास में 7-8 बच्चे हैं, और बच्चे अभी हम जाएंगे अभी, क्योंकि जून जुलाई में स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है। जून जुलाई में फुटबॉल, जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है वैसे फुटबॉल की मैचेस स्टार्ट होती है। तो ऐसे समय हम अभी जो है, अभी हमारे कोचेज जाएंगे। मैं खुद भी वेस्ट बंगाल जाऊंगा, उधर सिक्किम जा रहा हूँ मैं 13 तारीख को। तो वहां से 1-1, 2-2 बच्चों को, अंडर 14 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे और उनको अपनी एकेडमी में ले आएंगे। और एकेडमी तो हम आगे पीछे बना ही लेंगे अच्छे ढंग से, 1-2-3 साल में हम अपना मिशन पूरा करेंगे। लेकिन बच्चे हमारे, हम अभी हमारे पास में जो 2 साल पहले हमने एकेडमी के नाम से जो बच्चे लाए थे, तो उनमें से एक बच्चा पंजाब मिनरवा के लिए सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन कोरोना के कारण से नहीं जा सका। यानी हमारा जो टारगेट था कि 3rd ईयर 4th ईयर में ये बच्चे ISL के लायक के होने चाहिए करके, तो ISL के लायक के हमारे बच्चे अभी हो चुके हैं, हो रहे हैं। तो ये तो हम करना ही है और हम इसमें काम करेंगे। Sir, in this, what is the primary motivation that how do you motivate those students, because you're scaling into a completely different height? What are the
tips that you offer to motivate them? देखिए, ये जहाँ के नाम लिए मैंने, केरला, इधर वेस्ट बंगाल, इधर गोवा, ये साइड में फुटबॉल एक गेम बहुत अच्छे ढंग से खेला जाता है। यानी गली गली में फुटबॉल खेला जाता है, छोटे छोटे विलेजेस में फुटबॉल खेला जाता है। तो ग्रास रूट फुटबॉल वहां पर है। केवल इतना है कि उन बच्चों को के ऊपर में अच्छे सेलेक्टर की या अच्छा एक मिशन लेके कोई गया नहीं है। जैसे हमने 5 साल का मिशन बनाया है, ऐसे मिशन लेके इवन फुटबॉल एकेडमी जो बड़ी बड़ी है, इन लोगों ने भी इसको टारगेट नहीं बनाया है। इन्होंने एक सिलेक्ट कर लिया 15, 20, 30, 40 लोगों का, और उनके ऊपर में मेहनत कर रहे हैं। मेरा तो हर साल का स्टेज बाय स्टेप, एक एक स्टेप से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, क्योंकि मैं खुद इनके बीच में जाता हूँ। मैं ऐसे किसी के भरोसे काम नहीं करता, मैं खुद यहाँ जाता हूँ। Thank you, sir. I think the identification of the Players player is seems to be important. is important. Yes. And the second is you're driving it with a mission. It's not just an academy where you pay some Oh. fees and then finally some of them No, manage to get. free of cost. This is all free of cost. Yes, No so fees, absolutely. nothing. Yes. So I think these are the two critical things which are driving forces to what is getting done. Thank you very much, sir. Hand back to Professor Rao. Thank you very much, sir. ऐसे तो हम कंटिन्यूसली बात करते ही रहेंगे और इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन time is now closer to 9 p.m. Yes. So I will have to conclude it with your permission. It has been a fantastic discussion over the last 1.5 hours, and we are quite fortunate that we are sitting along with you, trying to learn from you and see what you have done. There are greater details that are available in your explanation, and I'm sure you will go on and explaining many things. In fact, in terms of selection of players, selection of coaches, small difficulties, what toughest situations to funniest situations. ऐसे तो बहुत रहेंगे, and there are many other questions. At least 10 more questions we have, 10 to 12 questions that we have. But what we will do is we will connect with you again, and we will request you to visit us. Yeah. What is happening is that ICFAI, हमारे जो organization है, institution है, वो pan India institution है. We are present in 20 states. We are present in 16 states with 20 campuses. And we are based in Hyderabad, but our campuses are all over India. We are in Hyderabad, we are in Jaipur. Jaipur's Vice Chancellor, Dr. Singh, has joined. He's listening to you. He's a great leader from Army himself. He's listening to your responses very carefully. And many students in the university are now listening to you live. Similarly, Hyderabad, Jaipur, Himachal Pradesh, Dehradun, Ranchi, Raipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Tripura. In all these locations we are present, and some of these locations, people love football. Yeah. The Northeast as well as Eastern India, they love football very much. So I see an opportunity of requesting you to visit one of these locations and then inspire those kids to get to football. It will be a golden opportunity for all of them to share the stage, in the sense, share the football ground with you and listen to your words of wisdom. Whenever it is possible, we can do that. In Nagpur also, we have an institute. We have to work on it. We have a ready-made institute available there on Amravati Road. We have established it long back. And Nagpur is not new. We have our marketing offices in Nagpur. In entire Maharashtra, we are hugely present. We have business schools in Mumbai and Pune, apart from various other states like Bangalore, Ahmedabad, Kolkata, Dehradun, Gurgaon, many other locations where we have 9 business schools and 11 universities. So we see a great opportunity of connecting back with you. But for now, I want to thank you, and I will summarize in 2 minutes. The entire discussion has been so fantastic, from small allegations to a very strong belief of self, from disturbances and resistance that you see from the community, or even from your family also, there was small resistance, to the self-belief and belief of family in you. They come back. Your son has come back from abroad to work with you. Yeah. That's a major revolution. You have influenced your son also, apart from influencing many sons of the soil in this country. From development through football to development of football. From being a sports teacher, you've become a game changer.
From Slum Soccer, you have taken it to Homeless World Cup. From local level to international stage. From grassroots to gold medals. From deep-rooted interest to specific measured goals every year with a structured plan. I think, sir, you have taken your message to the last man, from the football ground to the movie theater as well. Everywhere you have made a sincere attempt to touch all our lives. You are an epitome of the belief that if anybody strongly desires to do something, Yes, he can. पूरी कायनात उनके मदद में आ जाती है. The Yeah. entire universe will conspire Yeah. to make it happen. In your case, Yes. that is the Jita Jagta example, and I am very, very fortunate to say this to you live directly. And on behalf of all of us who are participating in this program, as well as our leadership team at the ICFAI group and ICFAI society at Hyderabad, we thank you very much for this time and sharing your values and inspiring us. I शपथ एक विलक्षण योगदान आहे. Thank you, sir. Thank you very much and good night, everybody. Thank you. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, we'll meet you on 29th of April with yet another distinguished leader, Ms. Megha Tata, who is the Managing Director of Discovery Channel. And we are going to talk about the innovations in digital entertainment. We'll see you next Friday at 7:30 p.m. Till then, do take care and be thankful. All of you watch June, and we'll see you next Friday. Thank you, sir. Good night.